Good evening and welcome to another amazing session of Trackland webinars. This is your host Harnoor Singh Fauzi. So today's session is going to be very amazing since we are going to focus on all the top selling domestic destinations in India and what and how you should sell them to your customers. So if you have any queries, just post them up in and we'll take them up in our Q&A session. So now without any further delays, I'd like to welcome the speaker for today, Mr. Safi Shahid, business head at Traplan. Hello Safi, how are you? Hello, Noor. I'm good. And thanks for introducing me. And also, it is great pleasure today to talk more about domestic destination. क्योंकि काफी टाइम से हमने domestic destination जैसा कुछ नहीं करा था. हम काफी small small pieces में हर एक destination के बारे में specific कुछ कर रहे थे. Again, ये idea last week के अपने session के बाद आया कि हम काफी सारे domestic destination की training दे रहे हैं, right? That is obviously great. But we should also do something very collectively where we can tell travel agent what is right now selling in domestic market as per data and as per trend, right? So this is where we have been working on since last week. और इसलिए ये हम एक वेबिनार लेके आए हैं आज डोमेस्टिक टूरिज्म पे, जहाँ पे हम दो चीज़ों पे फोकस करेंगे. पहला, वो डोमेस्टिक डेस्टिनेशन जो नेक्स्ट फ्यू मंथ पे सेल होगी, राइट? Obviously we will not take names जहाँ पे अभी भी कोविड सिचुएशन is not good. For example, Kerala, right? We are not sure about that destination, even though that is getting better, but we have not included that in our thing. Similarly, we will try to portray something offbeat destination जहाँ पे specifically because लोग अभी काफी टाइम से घर पे थे, so their hunger to travel is higher, so they can go for a very short duration weekend trip, right? Like Saturday Sundays, Friday Saturday Sunday club करके, right? So वो सारी डेस्टिनेशन और चीज़ें भी हमने पिक करने की एक छोटी सी कोशिश करी है तो इंश्योर कि हम अपने ट्रैवल एजेंट को उसके बारे में ज़्यादा बता पाए. ऑब्वियसली ये कोई डेस्टिनेशन ट्रेनिंग नहीं है, तो यहाँ पे हम डेस्टिनेशन आपको नहीं सिखा रहे होंगे. यहाँ पे हम बेसिकली कवर कर रहे होंगे आप कौन कौन सी डेस्टिनेशन अपने मार्केटिंग पोर्टफोलियो में पिक कर सकते हैं, कौन कौन सी डेस्टिनेशन आप अपनी टीम को सिखा सकते हैं, कौन कौन सी डेस्टिनेशन अपकमिंग सीजन में नेक्स्ट 2-3 मंथ में will give you much better sales क्योंकि कस्टमर्स की उसी की तरफ से ज्यादा डिमांड आ रही है. एंड दैट डिमांड इज कैलकुलेटेड कि फ्लाइट्स कैसी बुक हो रही है, होटल्स कितने सर्च हो रहे हैं एंड अदर थिंग्स, राइट? दिस विल हेल्प यू आउट इन प्लानिंग योर बिजनेस मच बेटर. Similarly, I will try to take you through all of this, and additionally we will try to help show you how Traftplan is going to help you in all of this so that you can have a better idea about this, right? So koi bhi travel agent, if you have certain suggestions, certain questions, certain doubt, just do pin us so that we can update you immediately. Okay, so that is not something we are going to worry about. Before we start, I will just ask Harun. Harun, can we start or do we have something else in our mind today? No. Yes, we can surely start. And since the vaccination process is being highly ramped up in India, so there is a lot of demand for domestic tourism as the international borders are also shut down. So we surely have a lot of enthusiasts for this webinar. So you can go ahead. करेक्ट. एंड इवन डोमेस्टिक डेस्टिनेशन में एक चीज जो काफी पॉजिटिव पिछले कुछ टाइम से आई है बिकॉज लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का डिफरेंट डिफरेंट रूल थे, राइट? बट since central government has come up with certain guidelines where all the vaccinated, like जिन्होंने अपनी दोनों vaccines ले ली है, right, there should not be any additional restriction on that. And one thing while doing little bit research on this, जितने भी लोगों से मेरी डिफरेंट डिफरेंट टूरिज्म डिफरेंट डिफरेंट मार्केट में लोगों से बात हुई, व्हाट आई अंडरस्टूड वाज पीपल हु आर ऑलरेडी वैक्सीनेटेड उनके लिए डोमेस्टिक में कम रिस्ट्रिक्शन है, राइट? सो आई वुड एडवाइज ऑल द पीपल हु हैव नॉट टेकन वैक्सीनेशन जस्ट गो एंड हैव द वैक्सीनेशन, राइट? बिकॉज आप ज़्यादा बेटर तरीके से ट्रैवल कर पाओगे. आप अपने कस्टमर को भी यही गाइड करें. सेकेंड, domestic market, how it has evolved is we have seen certain different geographies and certain different locations behave differently. वीकेंड का ट्रेंड हो गया या फिर डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन का हो गया. बिकॉज इंडिया में जो दो सबसे ज्यादा पॉपुलर डेस्टिनेशन थी फॉर हनीमूनर्स दैट इज स्टिल नॉट ओपनड अप. वन वाज केरला, सेकंड वाज अंडमान, राइट? They have either one have opened up with lot of restriction or one has not opened up at all, right? So that's why people who want to travel within domestic, right, वो काफी ज्यादा अल्टरनेट देख रहे हैं वो कहाँ जा सकते हैं कहाँ नहीं जा सकते, राइट? सो आई विल टेक यू थ्रू दिस. So I'm going to present my screen straight away ताकि हम ये अपना
सेशन स्टार्ट कर पाए. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. सो टुडे के सेशन में हम कवर करेंगे टॉप सेलिंग डोमेस्टिक डेस्टिनेशन टू फोकस. वो डेस्टिनेशन जो डोमेस्टिक में अभी सेल हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर आने वाले कुछ समय में सेल होती रहेंगी विथ रिस्ट्रिक्शन विदाउट रिस्ट्रिक्शन, सो वी कैन फोकस ऑन देम. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये कोई सेल्स प्रेजेंटेशन नहीं है फॉर डेस्टिनेशन कि आपको डेस्टिनेशन की गाइड मिलेगी, बट दिस इज जस्ट एन इन्फॉर्मेटिव सेशन जहाँ से आप अपने कुछ कुछ डेस्टिनेशन के बारे में, कुछ कुछ चीज़ों के बारे में जान सकते हो, राइट. And this is how we are going to be. Why to focus on domestic destination also in this current situation? ये एक बहुत ही important point है, because I have met lot of travel partners who are very much focused in international market only, right? And obviously international market अभी काफी limited open है. Maldives opened है for full for people who can travel either fully vaccinated or single dose traveler also with negative RT-PCR test. There are certain destinations also in international which has opened up, but most of the destinations are with heavy restriction, right? Uh, Plus, most of the destinations are opening up only for international, at least double dose, जिनकी fully vaccinated हो गए हैं, right? So that is one caveat where your customer might want to travel international, might not be able to do. So what he will do? He will travel to domestic destination. But अगर आप domestic नहीं करते हो, so he will switch his travel agent, right? Which effectively lead to your loss, right? So I would advise all the travel partners जो भी domestic नहीं करते हैं, see this opportunity to expand your business, right? So that you are not totally dependent only on international. You are also doing certain domestic destinations, so that अगर international business market recover नहीं करता तब भी domestic destination recover कर जाता है. सेकेंड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पे हमने काफी सारे ट्रैवल पार्टनर जिनसे बात करी है. व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, travel agent who were doing inbound, right? Because inbound market is still not opened up for a very long time. They have switched to domestic market now, right? That I know at least 10 to 15 suppliers such a way where their entire market was inbound. वो inbound ही करते थे और कुछ नहीं करते थे, but now they have opened up for domestic and they will continue to do domestic even after inbound market open हो जाएगा. क्यों? Because they want to diversify their market. They don't just want to depend on only inbound market. कल को inbound market बंद हुआ, so everything is shut. Rather they want to diversify in different segments in terms of tourism, so that even if one segment is down, the other segments can pick it up, ताकि overall sales, business growth ये सारी चीजें maintain रहे और वो customer को better experience दे पा रहे हैं, right? So why to focus with top 5 reason why you should focus on domestic destination is at least in domestic, if you see, all the major attraction has opened up for tourists. You see Taj Mahal has opened up, you go to Jaipur, all the major attraction has opened up. You go to anywhere, all the major tourist attraction our country has and opened up for people, right? Taj Mahal has become very popular weekend getaway from Delhi for a couples, right? Newlywed couples or normal couples, right? Because you want to go in Taj Mahal. और अभी ताज महल जाने का एक दूसरा एडवांटेज लोगों को क्या दिखता है, there is not much rush जो पहले हुआ करता था, so they can enjoy the scenic beauty of Taj Mahal or any other major tourist destination that you want to see. अगर आप दिल्ली में बात करें, दिल्ली में जितने भी major tourist attraction है, right? If you go right now, you will find very peaceful environment, very few people over there. So that gives you 2-3 things very advantage. आप आराम से नेचुरल चीजें देख सकते हो, प्लस आप आराम से फोटोज क्लिक कर सकते हो, जो कि अर्लियर टाइम में लोगों की फोटो आती थी, उस अट्रैक्शन की नहीं आती थी. So that is again going to be one advantage why you should focus on domestic, because अभी ये सारी चीजें ओपन हो चुकी है. If you go back 2-3 months, जब मार्केट ओपन हुआ था, तो इन जून जुलाई you would have seen huge demand for Kashmir, Ladakh and Himachal. And of course, who can forget the image of that Manali, जहाँ पे वो पूरी रोड ही फुल थी लोगों से, right? So that itself shows the potential of domestic market, जहाँ पे लोगों के अंदर travel की काफी ज्यादा हंगर है कि people want to travel domestic. Obviously लोग different तरीके से travel करना चाहेंगे domestic में, but there is a huge scope for travel in domestic itself, जो market में किया जा सकता है. Second thing which is very prevalent, third point, if you see, in people right now, post second wave COVID, is people are planning at very last moment time, right? People are booking hotels, flights and everything very last moment time from domestic itself. क्योंकि international में plan करना वो इतना easy नहीं है, because you need to see visa, you need to see certain other guideline, other things. But
in domestic at least people can plan that at very last moment of time, right? This gives them advantage over certain things कि वो कहीं भी travel कर सकते हैं much faster way में. Plus because flights and other things are much cheaper at this moment of time, so people are planning much better in this. For example, Ladakh, which was very high in June, July flight. Right now, the flight is such as cheap that people can plan for Ladakh very fastly, even though season is ending, but there is a huge demand for Ladakh even at this point of time, ताकि लोग वहाँ जाके travel करें, वहाँ लोगों से मिले, अपने trip को enjoy करके आए, right? One thing weekend लोगों ने वीकेंड ट्रिप वापस से लेना स्टार्ट कर दिया, ऑब्वियसली मैंने भी ली है, तो दिस आई कैन से माई सेल्फ एज वेल. आई हैव नॉट टेकन ड्राइव बाय कार, बट दिस हेल्प्स अस टू जस्ट गो अवे फ्रॉम द सिटी हसल बसल, राइट? दिस इज वन ट्रेंड विच पीपल हैव सीन, राइट? यहाँ पे लोग दो तरीके के पैकेजेस ले रहे होते हैं, वन विथ going via own cab, second complete package, right? So this is a huge demand, at least Mumbai, Delhi, Bangalore cities में. Even if we see weekends में काफी सारी cities में 5-star 4-star hotels sold out हो जाते हैं because a huge demand in the market, right? So this is going to be staying here, right? So this is why domestic market we should focus on. And lastly, obviously international market, all international market is still not opened up, right? So people will find a better, no other better gateway than going to a domestic city, domestic destination itself, which offer them a similar kind of experience, right? People might not go to, people might not be able to travel to Switzerland, but people can go to Kashmir to enjoy similar kind of scenic beauty, similar kind of skiing experience and everything, right? तो लोगों के पास डोमेस्टिक में वो ऑप्शन है जो लोग अब डोमेस्टिक में भी एक्सप्लोर करना चाहेंगे, राइट? दिस इज द रीजन, top 2 reason, top 3 reason, top 5 reason why should explore domestic destination, right? uh, Obviously top domestic destination to focus in upcoming season might not be few surprises, obviously हो सकता है सबको ये पता हो, but still let's go through this. First is Goa. Why our pick number 1 was Goa is because this is all season destination which is loved by everyone, right? Reason because अभी inbound customer Goa नहीं आ रहा है, right? Earlier Goa used to be a huge hub for the inbound customer, जहाँ से international काफी सारे लोग आते थे, stay करते थे. But अगर अभी कोई travel करेगा गोवा में, you will find that Goa is not filled with international customers. So all the Goa hotels, all the Goa properties, all the Goa resort, all the Goa beaches, all the Goa restaurant, all the Goa cafes are very much open and spaces are available for Indian customers, right? Plus you can enjoy cuisines, food and better atmosphere in Goa because it is very less crowded, right? Typically Goa की image आपके मन बीच माइंड में क्या आती है, बहुत सारे लोग, right? This is what we have seen in multiple places, right? But if you travel to Goa this point of time, obviously you'll find a lot of people, but in beaches that will be generally not the trend. Plus because international traveler right now in Goa, you might find very good deals in resort hotels and other places, right? So Goa is the right place to go right now, right? In terms of tourism, we have seen Goa season has started picking up in last month, right? A lot of people have traveled to Goa, specifically people who are planning for honeymoon, people who are planning for anniversary, people who are planning for birthday gateways have still Goa in their top list, right? Because in India right now in beach destination, अंडमान जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है लोगों के लिए, फ्लाइट कनेक्टिविटी दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. केरला अभी भी नहीं ओपन हुआ है. सो इन बीच डेस्टिनेशन इन विद इन इंडिया, गोवा इज द नंबर 1 डेस्टिनेशन राइट नाउ जहाँ पे लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, राइट? बर्थडे पार्टी हो गई, किसी भी चीज के लिए हो गई, दैट इज स्टिल गोवा इज द नंबर 1 प्रायोरिटी फॉर पीपल, राइट? Obviously in Goa most of the popular party places and most of the places which was very popular in pre-COVID time, right, has already opened up for people, right? And people are enjoying those things over there. And I would advise if anyone want to promote Goa right now, this is just the right time to promote Goa, right? Because obviously अभी थोड़े से सीजन सितंबर में आपको बेटर रेट्स मिल रहे होंगे, अक्टूबर में बेटर रेट्स मिल रहे होंगे, सीजन टाइम में काफी सारी ब्लैकआउट डेट होंगी, तो स्टिल पीपल विल प्रेफर टू बुक मच एडवांस ताकि वो चीजें सोल्ड आउट ना हो, राइट? बिकॉज पीपल आर प्लानिंग very ahead for November, December, and they are not thinking in terms of कि international तब तक open होगा या नहीं होगा, लोगों को नहीं पता है, right? So this is one of the things which will ensure Goa stay remains a top destination in within India. गोवा के कोविड रूल अभी काफी सिंपल कर दिया गवर्नमेंट ने.
if you're double vaccinated, right, so you don't need to carry RT-PCR report while traveling to Goa. It is as simple as that. If you're single vaccinated, then you have to carry RT-PCR not older than 72 hours. If no dose of vaccination, need to carry RT-PCR for not older than 72 hours. Right. So this is what they have simplified. अगर आपने दोनों डोज वैक्सीनेशन के लगवा लिए हैं, so कोई RT-PCR कैरी करने की जरूरत नहीं है, राइट. बट अगर आपने दोनों डोज नहीं लगवाए हुए हैं, एक ही डोज लगवाया हुआ है या एक भी डोज नहीं लगवाया हुआ है, then you have to carry RT-PCR report with you, right? This is very important and critical for all the people who are planning for travel to Goa, right? Because this is for your health and your safety only, nothing else than that. Second destination, which is our top chart, is Himachal. Obviously हिमाचल अभी ऑफ सीजन से जा रहा था बिकॉज बारिश हो रही थी, काफी सारी जगह पे लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, प्रेफर नहीं कर रहे थे ट्रैवल करना. बट समर हो या विंटर हो, वन डेस्टिनेशन विच ऑलवेज कीप नॉर्थ इंडिया हुक्ड, लोग यहाँ ट्रैवल ही करते रहते हैं, सेकंड मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन इन इंडिया इज हिमाचल. ये कभी नहीं चेंज हो सकता है बिकॉज पीपल विल go for weekends in Himachal and people will drive through Himachal because Himachal is such a beautiful destination. Explored और unexplored दोनों चीजें यहाँ पे हो रही होती हैं, right? Obviously हिमाचल में top destination which you can focus on, why to Himachal focus on is Himachal was because हिमाचल में weekend destinations काफी सारी हैं for adventure seekers, right? Obviously ये आप देख भी सकते हैं कि हिमाचल में आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं ऑफ सीजन weekend destinations के लिए, but in terms of variety, it offers you huge range of things. For example, there's a paragliding and beer wheeling, which is a very great option. There is if you want to do very long trekking, then there's a Kasol is a very great option, right? So those options are available in Himachal, so you can go through it. In Shimla, Manali, these are the top still number one and number two popular cities in Himachal where people take the package, right? ये changing हुआ है. Shimla, Manali still remain the most two popular places in Himachal. People still prefer to either take hotels, either go to Shimla alone, Manali alone, or club 2 night Shimla, 2 night Manali, 2 night Shimla, 3 night Manali, 3 night Shimla, 2 night Manali, to ensure कि उनको best package plus best experience मिल रहा हो हिमाचल का. This is not true. In terms of COVID rule in Himachal, double vaccinated people don't need to carry RT-PCR report. Again, Himachal ने simplify कर दिया rule. But any person who is not vaccinated, they need to carry 72 hours before Himachal, right? Kashmir is our number 3 destination. Why? Obviously Kashmir अभी एक ऑफ सीजन में चला जाएगा थोड़े टाइम में. इट विल बी मोर ऑफ एन विंटर टाइम के लिए ट्रैवल लोग कर सकते हैं, नॉट समर, जैसे समर सब लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं. बट आवर नंबर 3 पिक फर्स्ट कश्मीर बिकॉज इन इंडिया कश्मीर में विंटर में जाने के भी अपने अलग एडवांटेजेस हैं. The scenic beauty of Kashmir in snow, laden time is unimaginable and unthinkable, right? Obviously, summers you will find very beautiful sun, very beautiful scenic beauty, but seeing same thing in winters when the Dal Lake is frozen, right? That has certain another aspect of that beauty that is unthinkable, right? Also, Kashmir is our third pick for the top destination in domestic because of whatever things are right now. We think that Kashmir is going to grow in terms of tourism in this upcoming season. Because Kashmir summer ends, right? So there'll be demand for winter season also. But because summer season has ended, so now Kashmir package might be much cheaper also, right? So it is better time to promote this destination for winter specific packages, right? Where you are planning to send your customer with certain activity for winter doing, right? Popular snowfall in winter, right? Very low airfare pushes people to decide in travel in destination because winter season होगा तो obviously कश्मीर के airfare भी काफी ज़्यादा drop हो जाते हैं. To ensure कि customer को अगर weekend पे travel करना हो, so they can only go to Srinagar and come back by traveling to Srinagar only, right? This is one of the top things that people can do in Srinagar, right? Obviously श्रीनगर के बाद हमने कुछ ऑफबीट डेस्टिनेशन भी चूज करी थी जो लोग प्रमोट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म इन डोमेस्टिक इटसेल्फ. वो ऑफबीट टूरिज्म क्या थी? तो बेसिकली ऑफबीट में हमने एक सिंपल सी चीज देखी थी, व्हाट आर द पॉपुलर वीकेंड डेस्टिनेशन इन मल्टीपल स्मॉल मल्टीपल प्लेसेस जहाँ पे लोग प्रमोट कर सकते हैं, जहाँ पे लोग ट्रैवल करना चाहेंगे. ऑब्वियसली वी हैव ट्राइड टू कवर ऑल द ज्योग्राफी वाइज. For example, North India said 2 very popular destination for weekend getaways, Uttarakhand and Himachal, right?
So in Uttarakhand, basically trip to Mussoorie, right, is kind of a very good option in weekend destination. यहाँ पे आप अपने 2 night 1 night 2 days या फिर 2 night 3 days का पैकेज आराम से इजीली सेल कर सकते हैं अपने कस्टमर को फॉर जस्ट टू escape from this city and people go travel enjoy the city and come back. In Himachal both the packages for adventure seekers, right? There are a lot of young generation who are adventure seekers who want to go to Himachal, explore the Himachal in terms of adventure, right? So for those people, there are two options. One is Birbiling, second is Kasol. Birbiling is very famous for paragliding, right? Birbiling is one of the highest places of paragliding in Asia, right? So it is a must for people who are adventure seeker to go there and haven't be adventure over there. Kasol because of tracking, right? Kasol is very famous for tracking, and obviously Kasol ki track is one of the toughest in Himachal. So obviously जो भी tracking के enthusiast हैं, आपको उनको वो package बना के promote करना चाहिए. In Mumbai weekend getaway, we have seen a huge demand in terms of Mahabaleshwar because of not because of hotel, but obviously because there are villas, lot of villas is available. So people are planning and booking villas and traveling on their car at last moment in Mumbai, right? So it is must to have certain kind of villa option with you in terms of hotel. So whenever your Mumbai customers ask for you, you can give to them. Plus you can also generate certain leads for Mahabaleshwar, promoting Mahabaleshwar as a destination. For Bangalore weekend, we have seen good increase in the demand for Coorg and Mysore, specifically Coorg, because it is a very popular weekend getaway from Bangalore, and this point of time they have very scenic beauty. So that's what we have seen in terms of advantages that people are planning to go over there. Right. Then last point which comes into our mind that okay, everything is great, but how do TravClan help us in domestic, right? Obviously, you have seen that we are very helping in Maldives with certain systems, certain processes. But how do TravClan help us in domestic? TravClan कैसे help करेगा मुझे domestic का market grow करने में या business grow करने में अगर अभी नहीं है? So there are certain things which TravClan also does, which I will show you live also. TravClan help in domestic destination doing 2-3 things. Auto quote हमने इन destinations के live कर दिए हैं, हिमाचल, गोवा, कश्मीर, लद्दाख. Obviously there will be certain things जैसे हम pricing better कर सकते हैं, जैसे हम certain destination की चीजें better कर सकते हैं. Obviously this is possible and we are already working on it, and your feedback will be needed in this. But ये सारी destination वो है जहाँ instantly within 2 minutes quotation आपकी email पे आ जाता है. You have put in the detail, you check the pricing and you can get the quotation within 2 minutes on your email. सेकंड डोमेस्टिक डेस्टिनेशन के भी हमने काफी सारे मार्केटिंग मटेरियल बना के ऑलरेडी अपडेट करे हुए सिस्टम में, तो आप वो भी देख सकते हैं ताकि आपको उसका आइडिया लग जाए, राइट. फोर्थ, ऑलरेडी हमारा होटल सेक्शन लाइव है जहाँ से आप होटल्स की डिटेल्स देख सकते हैं और होटल्स की चीज़ें देख सकते हैं. एंड लास्टली हमने एक ट्राफ्ट कलेक्ट पेमेंट का ऑप्शन बनाया हुआ है जहाँ से आप अपने कस्टमर के लिए पेमेंट कलेक्ट कर सकते हैं और अपने कस्टमर को पेमेंट के बारे में बता सकते हैं, राइट. बिफोर वी मूव अहेड, मैं आपको इसके बारे में एक लाइव डेमो भी दिखा देता हूँ डोमेस्टिक ऑटो कोड का. सो वंस यू लॉग इन ऑन ट्राफ्टक्लैन, राइट, आप यहाँ पे होम पेज देखते हैं. मोबाइल एप्लीकेशन में भी आपको ऐसे दिख जाता है, गेट इंस्टेंट डोमेस्टिक कोड कश्मीर, हिमाचल, गोवा, लद्दाख. आपको यहाँ पे कश्मीर का ऑटो कोड दिख जाएगा, कश्मीर का ऑटो कोड का पेज दिख जाएगा जहाँ पे गेट इंस्टेंट कश्मीर कोड. आपको जो भी कोटेशन चाहिए आप यहाँ पे क्लिक करके अपने कस्टमर की डिटेल फिल करके आप यहाँ से कोटेशन मंगा सकते हैं. दैट इज एज सिंपल एज दैट कि विद इन 2 मिनट्स में आपको कोटेशन आ जाएगा. सेकेंड थिंग which also help we are trying to help travel agents, view Kashmir pricing chart. तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे आपको हर नंबर ऑफ नाइट और हर आइटनरी का पिकअप एंड ड्रॉप के साथ डिफरेंट मील प्लान के साथ डिफरेंट कैटेगरी रूम के साथ उसका स्टार्टिंग प्राइस पता चल जाएगा, राइट. दिस हेल्प्स you to while talking to your customer to pitch them anything much faster. क्या आप उनसे इमीडिएटली बात करके उनको बता सकते हैं, राइट. ये हमने केवल डोमेस्टिक में केवल यहाँ पे नहीं है, कश्मीर में नहीं है. इफ आई शो यू इट इज इन हिमाचल ऑल्सो, राइट. एंड हिमाचल में हमने क्लियरली यहाँ पे बताया हुआ पिकअप एंड ड्रॉप है, चंडीगढ़ टू चंडीगढ़, दिल्ली टू दिल्ली, चंडीगढ़ टू चंडीगढ़, दिल्ली टू दिल्ली, राइट. तो ईच आइटनरी हैज डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट कहाँ से पिकअप है कहाँ से ड्रॉप है. आपको वो आइटनरी डिटेल में चाहिए
आपको सिंपली ये क्लिक करना है, आपको चूज करना है टू शिमला मनाली, 2 स्टार डिजायर, and you fill this detail and automatically code will come on your email ID, right? सिमिलरली आप यहाँ पे गोवा भी देख सकते हैं, गोवा में आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप इनका ब्राउजर डाउनलोड करना चाहते हैं, टू प्रमोट दिस आप गोवा ब्राउजर यहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, सो यू कैन सेंड इट टू योर कस्टमर, सी अ ब्यूटीफुल गोवा browser, so that you can send this to your customer, correct, ताकि आपका कस्टमर आपकी पॉइंट को समझ पाए और उसको दे पाए, करेक्ट, दिस इज as simple as that. सिमिलरली अगर आप डोमेस्टिक करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे होटल सेक्शन है जहाँ पे आप जाके होटल्स देख सकते हैं, होटल से चीज़ें देख सकते हैं, होटल से चीज़ें सर्च कर सकते हैं किसी भी सिटी किसी भी चीज़ के लिए, एंड आई एश्योर यू इन होटल्स यू विल गेट द बेस्ट प्राइसिंग हियर. अगर आपको होटल में लगता है हमारी प्राइसिंग बेस्ट नहीं है, just reach out to your account manager, whoever your account manager is, right, and definitely they will help you out with the best option and best offer, right? To promote domestic, यहाँ पे हमारे पास एक मार्केटिंग सेक्शन भी है, यहाँ से आप मार्केटिंग सेक्शन से प्रमोट कर सकते हैं डोमेस्टिक, और यहाँ देखिए अभी हमने रिसेंटली स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट, राइट, सो फॉर ईच डेस्टिनेशन, राइट, यू कैन सी टॉप रीजन टू ट्रैवल टू विजिट सिक्किम, राइट, तो यहाँ पे आप हर एक डेस्टिनेशन का, लेट्स गो गोवा, let's explore Andaman, right? So you can see these poster and you can promote domestic destination with your customer. This will enable you to do much more, and I hope this will help you in growing your business also, right? Uh, right now from my side, that's it. Harnoor, can we take the questions? Yes, sure, Safi. Indeed, it was a very informative session. So now we'll see if we have any questions from our audience. Yes, so the first question is from Travel Cars. So they are asking how to check your shown rates are valid till which month? So if you go in our auto code, right, the rate which are showing, right, you can choose any travel date, right? Suppose if you're choosing say next year January, right, if there is no rates are available for that date, right, you will instantly not receive any quotation. Our team will cross check the pricing with the supplier, with the concerned team, and they will send you updated quotation within 30 minutes on your email, right, just to ensure you are getting the right pricing. Suppose if we have the live pricing available for that moment of time, suppose your customer is traveling say September or October, you have asked for that code, you will receive instantly live quotation on your email, and that pricing will be valid, right? So don't worry about that. Yes, so I will urge everyone to use more and more auto code, right? For simple reasons, so you can get faster quotation on your email. Second, if you have any feedback, any suggestions regarding auto code, what we should do better, how we should improve it, so that is definitely open for us, and you can send us and we will definitely implement it. yes, so as of now, we have not received any other queries. So guys, if you do have any queries, please post them in the live chat. तो हरनूर, अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं डोमेस्टिक में, तो अभी कहाँ आप ट्रैवल करते हैं? So my personal opinion is I would like to go to Leh and Ladakh. अच्छा, आप लेह लद्दाख जाना चाहते हैं? तो देखो लेह लद्दाख जाने के लिए सितंबर इज द बेस्ट टाइम, क्योंकि देखो वहाँ पे बिल्कुल भी भीड़ नहीं होगी, रेट अगर आप फ्लाइट की प्राइसिंग अभी चेक करोगे तो अराउंड 1500 3000 मैक्सिमम फॉर अ कपल आ रही होगी रिटर्न एयरफेयर, राइट, एंड प्लस इस टाइम यू विल गेट अ बेटर सीनिक ब्यूटी, फोटो खींचने के लिए कम लोग होंगे, तो आप इंस्टाग्राम पे ज्यादा बेटर फोटो खींच पाओगे, राइट. सो आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ प्लेसेस जहाँ पे आप ट्रैवल कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द चॉइसेस दैट यू हैव, राइट. अगर लेह लद्दाख नहीं आते तो आप कहाँ पे जाते थे? सेकंड चॉइस क्या होती है आपकी? Second choice may be Himachal then, or Uttarakhand if not Himachal. हिमाचल में कहाँ जाते हैं? Manali would be my pick. हाँ ठीक है, ग्रेट. वो जब से मैंने वो, इसलिए मैंने अपनी पीपीटी में भी लिखा था, मनाली इज वेरी पॉपुलर विद पीपल एंड नो वन कैन फॉरगेट दैट इमेज. पीपल once it opened up, everybody was in Manali. Whole Delhi was kind of in Manali, right? Yeah. Nobody can
how half of Chandigarh and half of Delhi was in Manali, found in Manali in that one picture, right? So obviously one of the very popular destination, and I hope everyone start traveling more and more in domestic destination also. So since we do not have any other questions coming in, thank you so much, Sefi, for this amazing session. I hope it was a great learning experience for the audience. Thank you so much, audience, as well, for joining this session. So if you do like today's session, do give it a thumbs up and don't forget to press the subscribe button and the bell icon so that you do not miss on any updates on any further webinars coming on this Travel and Official YouTube channel. Thank you so much, guys. You are an amazing audience.